Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स विषय रे पढ़िबा सो ऑलरेडी हमें जानिचु न्यूट्रॉन होची चार्जलेस पार्टिकल माने दे हैव नो चार्ज ता सहित दे आर नॉन आयनाइजिंग इन नेचर तेणु ए न्यूट्रॉन्स गुडा को हमें ते सहज रे डिटेक्ट करि परिबा नाही जेमति कि डायरेक्टली गैस काउंटर यूज करिकि हमें ए न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करि परिबा नाही सो किछिटा प्रोसेस जोटा कि हमें यूज करि परिबा फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रॉन डिटेक्शन सेटा हैला नंबर 1 the neutron induced nuclear reaction. Okay, so this will give charged particle reaction products such as photons and alpha particles. Number 2, induced fission in certain heavy elements like your uranium जोटा कि radioactive element गोटे heavy element एटा ता सहित 3 नंबर रे elastic collision between neutrons and nuclei particularly hydrogen nuclei naba ame okay so it will result in the later into motion later माने ए जो हाइड्रोजन न्यूक्ली को ये मोशन क्रिएट करिवो तापर 4 नंबर रे कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बा न्यूट्रॉन कैप्चर बाय सर्टेन स्टेबल आइसोटोप्स जोटा कि हमें बीटा डीके रे भी पढ़िथिला व्हिच आर thereby converted into radioactive isotopes emitting the beta and gamma rays okay so यार प्रिंसिपल टा देखो न्यूट्रॉन डिटेक्शन रो it is based on the principle of neutron and your gamma particle eta okay ए होची तमरो न्यूक्लियर रिएक्शन टा आकु देखिबा so this method of depletion depends on the absorption of neutrons by an atom with the simultaneous emission of gamma ray photon okay neutron absorb hebo आसेपटे gamma ray photon emit hebo so the choice of the material is actually limited okay कोनोसी एमती सब प्रकार मटेरियल हमें यूज करि परिबा नहीं किछरा लिमिटेड टाइप रो मटेरियल ही हमें यूज करि परिबा एज द एब्जॉर्बिंग मटेरियल okay because it can absorb neutrons and also being capable of existing in gaseous form okay gaseous form रे सेटा exist करथवा दरकार okay गोटे एग्जांपल हमें ई भलिया गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन रो एठी देखैछु हीलियम सहित हमें न्यूट्रॉन रो एठी एब्जॉर्प्शन हेची so that it is giving another isotope of helium plus your gamma ray photon okay so usual way जदि हमें देखुछु डिटेक्शन पाई of a charged particle by analyzing the track of ionization it does not work for neutrons जेमति हम ऊपर डिस्कस करथला गैस डिटेक्टर्स को जेमति यूज करके डायरेक्टली हमें न्यूट्रॉन गुडा को डिटेक्ट करि परिबा नाही बिकॉज़ दे आर चार्जलेस पार्टिकल्स सो ए न्यूट्रॉन डिटेक्शन पाई हमें दुईटा वे यूज करिबा गोटे हला रिएक्शन प्रोडक्ट्स डिटेक्टर्स ओके आ गोटे हला फिशन डिटेक्टर्स ओके सो दुईटा न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स को हमें टिके एबे या विषय टिके डिटेल देबे पढ़िबा ओके सो फर्स्ट हला रिएक्शन प्रोडक्ट डिटेक्टर एई मेथड रे हमें गोटे न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को सेटअप करिकी यूज करिबा एंड वी विल डिटेक्ट the charge particle or gamma ray which is produced in the reaction so ए जो gamma ray कोन करिवो एक्चुअली एटा होची secondary charge particle which will give the electrical pulse or current एई pulse को हमें मेजर करिबा at the end so commonly जो न्यूक्लियर रिएक्शन को हमें यूज करू सेटा हला देखो एठी बोरॉन 10 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल लिथियम 7 किंबा लिथियम 6 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन 3 okay
सो क्लासिकल एग्जांपल होची गोटे बोरॉन डिटेक्टर फॉर स्लो न्यूट्रॉन्स ओके ये जो बोरॉन डिटेक्टर होची गोटे गैस काउंटर in which the inner wall is lined with boron or the counter is filled with boron fluoride mane BF3 okay and this gas is enriched with boron 10 element okay acha ei reaction jo counter re hebo taku ame likhi pariba boron 10 plus neutron it is giving you lithium 7 plus helium 4 eta a particle hela nothing but your alpha particle along with the production of gamma or photon okay so alpha particle jota RHS re dekhila ame emit hochi in the neutron reaction it is detected through the ionization which is produced by it in the counter a counter ku ame operate kariba in the proportionality region okay and it is very easy to distinguish between the neutron events and gamma ray or cosmic ray background okay but however a boron जो detector ताको आमे यूज करिकी जो डिटेक्ट करिबा फास्ट न्यूट्रॉन which are surrounding it with paraffin जोटा कि गोटे मॉडरेटर बा मंदक जोटा कि प्रोसेस को स्लो करे in which the fast neutrons are slow down by elastic collision ओके मंदक सब बळे प्रोसेस टाको स्पीड को स्लो करिथाय ओके एथि आमे पाराफिन को यूज करूछु ओके अच्छा सेकंड वन हला फिशन डिटेक्टर देखो आमे न्यूक्लियर फिशन विषय रे पढिछु जो थरे कि गोटे हेवी न्यूक्ली भांगी जाय कि टू और मोर फिशन फ्रैगमेंट्स क्रिएट करूछि ओके सो फिशन रिएक्शन रे कोन हुए आमे यूज करिबा फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रॉन डिटेक्शन so it consists of a ionization chamber whose walls are coated with fissionable material fissionable material माने से जो heavy nucleus कथा एठी आछि so आमे कोन करिबा न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करिबा so that it will cause fission जेमति कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम को आमे गोटे न्यूट्रॉन रे बाडे की सेथिरे फिशन करिथाउ न्यूक्लियर फिशन जहा द्वारा कि दुईटा पार्टिकल जनरली बाहरे बेरियम आउ क्रिप्टन along with the production of 3 neutrons okay similarly एठी आमे फिशन करिबा ए जो फिशनेबल मटेरियल रो बाय incident neutrons okay so this will give rise to heavy fission fragments and these fragments each will have kinetic energy which will be more than 50 MeV okay এই ফিশন ফ্র্যাগমেন্টস को एक्चुअली आमे देखिले ए माने पुनी आयनाइजेशन करिवे इन द गैस with the ionization chamber okay so that a large electrical pulse will be obtained which can be counted or detected okay now for the detection of slow neutrons the fission detectors are usually coated with uranium जेमति कहउतली एटा होची गोटे heavy element uranium 235 while for the detection of fast neutrons आमे यूज करिबा uranium 238 ता सहित thorium 232 ओके अच्छा डिटेक्शन केमती हुए एटा विषय रे टिके देखि देबा सो द बेस्ट मेथड इज टू डिटेक्ट द न्यूट्रॉन्स इनडायरेक्टली बिकॉज डायरेक्टली पॉसिबल होनी सो इनडायरेक्टली केमती यूज करि परिबा आमे एठी सिंटिलेशन काउंटर यूज करिबा by observing the ionization tract with the detectable okay आउ ता सहित अदर मेथड जोटा कि आमे डिटेक्शन पय यूज करि परिबा सेटा होउची जदि आमे न्यूट्रॉन्स को अलाउ करिबा फॉर द इंटरैक्शन विथ द एटॉमिक न्यूक्ली जोटा कि आमे प्रिंसिपल रे ऑलरेडी डिस्कस कर सारिछु सो जनरली जो किछरा न्यूक्ली को आमे यूज करि परिबा एई पर्पस पय सेटा हला हीलियम लिथियम बोरॉन हेवी न्यूक्ली रे यूरेनियम रो दुटा एठी आइसोटोप ता सहित PNP ओके अच्छा हीलियम गैस न्यूट्रॉन डिटेक्टर जोटा अछि इट इज सेड टू बी द बेस्ट फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स ओके थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन्स रो डिटेक्शन पई हीलियम गैस न्यूट्रॉन डिटेक्टर को हमें यूज करि परिबा ओके which are having deployed in the fission reaction okay stable isotope helium ro achi helium 4 okay helium 3 gote helium 4 gote both of them are isotopes and it is produced in the gamma photon of specific energy
अच्छा लॉन्ग वेवलेंथ न्यूट्रॉन जोटा अच्छी माने जो न्यूट्रॉन रो वेवलेंथ बेसी अच्छी माने फ्रीक्वेंसी कम अच्छी सो सेति पई हमें BF3 एई गैस को जो बोरॉन रो हमें देखुतला बोरॉन फ्लोराइड सेई गैस को हमें यूज करिबा to be better detection, but due to the technical difficulties of handling a corrosive or toxic, actually BF3 gas टा होची toxic बा विषाक्त gas तेणु it is very difficult to handle it technically. So आमे एथि पई actually prefer करिबा BF3 जगह रे पुणी helium को. Okay, so a helium-3 gas detectors को use करिबा in which the gas is filled at a pressure of 5 to 10 Newton per meter square above the atmospheric pressure. ଆଉ जो एठी typical helium-3 gas detector आमे use करिबा तार size टा vary करिबो from 10 to 15 centimeter and cylinder जोटा रहिबो it will have a diameter of 2 to 3 centimeter. ओके एतकी तार डायमीटर रहिबो तापरे मल्टी डिटेक्टर्स को जदि हमें देखिबा हियर द न्यूट्रॉन्स आर डिटेक्टेड इन व्हिच अगेन helium-3 gas is filled with a quenching gas. Okay, quenching gas such as mixture of xenon and methane. Okay, so multi detector कोन करिवो एटा यूज करे for detection of your neutrons which consist of an array of vertical wires or microstrips at fixed interval apart. So the interval जो एठी fixed interval रहउची पाखापाखि तार एंगल जोटा कि ताकर स्पेसिंग टा 0.1 डिग्री रहिबो. ओके ए भलिया आमे एरे बा वर्टिकल एरोज ए जो माइक्रोस्ट्रिप्स रो फिक्स्ड इंटरवल रे रखि परिबा and these detectors are very large and can cover a large solid angle area. Okay, let us now see the experimental setup. Now as you can see in this figure which is showing us the schematic diagram of the neutron detector, eta asila incoming particle jota ki hit kala neutron detector को. It is connected with scalar unit, trigger unit and output unit. Okay, so incoming radiation by particle it consists of neutron and photon. Okay, and it is made to fall on the detector. Thereafter जो डिटेक्शन सिग्नल टा रहिबो एठी डिटेक्टर रु जेमति कहली कनेक्शन होइछि स्केलर ट्रिगर आ आउटपुट यूनिट सहित से आड़ को जिवो. सो ई स्केलर यूनिट रो काम हैला इट विल काउंट द नंबर ऑफ दीज इनकमिंग पार्टिकल्स. ओके आ गुटे बेनिफिट कोन a detector it has small dead time. Okay, that means irrespective of the speed of incoming particle detector jaha hele bi ei incoming particle को count करि परिबो. Okay, it will not fail to count the particle. Okay, अच्छा output unit जोटा हमें देखुछु actually it consists of an amplifier and oscilloscope जोटा कि गुटे current pulse को register करिबो with every event. Okay, now a जो output pulse टा actually it is the ionization current with the detector. Now total energy को हमें incident particle रो calculate करि परिबा by integrating the current pulse with respect to time and यहाँ द्वारा हमें total charge जोड़ा deposit हबो ताकू record करि परिबा. अच्छा गोटे ADC बा analog digital converter जोटा कि actually carry out करे integration in the output event ताकू हमें यूज करिबा. आउ ए ADC डाटा सेंड करिवो टू a DAQ जोटा होची डाटा एक्विजिशन सिस्टम which contains sensor. सेंसर द्वारा हमें इलेक्ट्रिक पल्स को मेजर करि परिबा such as voltage, current, temperature, pressure etc. with a computer. Okay, computer connection हेतिबो. So ए computer डाटा को कोन करिबा जोटा हमें ऑब्जर्व कला जे फोटोन पल्स रे एक्चुअली तार जो लॉन्गर रहिबो एट द एंड्स. ओके फोटोन पल्स टा जो ई भलिया बाहरला सो एट द एंड पार्ट रे एठी मनकर लेंथ बेसी रहिबो. ओके और टेल पार्ट रे अच्छा किंतु न्यूट्रॉन पल्स रे दे आर एक्चुअली वेल सेंटर्ड. ओके वेल सेंटर से मानकर पल्स टा रहिबो. सो इन दिस वे इनकमिंग न्यूट्रॉन जोटा अछि ताको हमें इजीली डिटेक्ट करि परिबा. ओके
photon pulse ଆଉ neutron pulse ଆଉ photon pulse ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଲା difference। photon pulse ର end ବା tail part ଟା longer ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା drawbacks ମଧ୍ୟ ଏଇ neutron detector ରେ ବି ରହୁଛି। ନମ୍ବର 1 ଦେଖ ହେଲା background noise। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସରେ ନଏଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ unnecessary unwanted जोटा एनर्जी लॉस करता है। तो बैकग्राउंड नॉइज एक्चुअली इट इज caused by high energy photons which are obtained from stray alpha and beta particles। okay, and these stray particles must be filtered out। okay, याको हमें बाहर करने को पड़िबो, otherwise ये बैकग्राउंड नॉइज टा आसीबो। केमती हमें याको फिल्टर आउट करबा? by shielding the detector with lead walls। okay, lead रो wall रे हमें याको सील करने को पड़िबो। okay, second one, high detection rate। okay, so high counting rate বা high detection rate এই process रे जो आमे देखुछु detection of neutrons रे actually एटा overlap करिवो with the counting। okay, so ए जो overlapping हैला ता द्वारा जो measurement आसीबो several events रो it will be very much difficult to separate from each other। okay, ତେଣୁ କରି এই overlapping এই high detection rate द्वारा जो होची ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଟେକ୍ସନଟା ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଆସିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଥାର୍ଡ ୱାନ୍, ଲୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ର ଏନର୍ଜିଟା ଲୋ ବା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅ ମେଜରେବୁଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରେଣ୍ଟ। ଓକେ, and the last point is the neutral behavior। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି chargeless particle, they do not have any charge and they are unresponsive to any electric field। okay, କିଛି ବି response ଦେଖାନ୍ତିନି କୌଣସି electric field को। so this creates very much difficulty for the detection purpose of neutrons। okay, so this is all about your neutron detector। Thank you.